हेलो स्टूडेंट। आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स रिलेटेड टू MHT-CET कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नाउ वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1 इज एंगुलर स्पीड ऑफ आर हैंड ऑफ अ क्लॉक इन डिग्री पर सेकंड। सो एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी। फॉर्मूला ये है। अभी यहां पे कौन सा हैंड दिया है? आर हैंड। तो आर हैंड का पीरियड होता है 12 आर, बट हमें निकालना है पर सेकंड में, डिग्री पर सेकंड में। तो 12 आर को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो इंटू 60 आ जाएगा यहाँ पे। सो 2 इंटू पाई का जो वैल्यू आप पे डालेंगे हम डिग्री में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पूछा है उन्होंने डिग्री पर सेकंड में पूछा है। पाई का वैल्यू होता है इन डिग्री 180 डिग्री डिवाइडेड बाई टी। इट इज 12 इंटू 60 इंटू 60। अभी हमें ये सॉल्व करना है टू गेट द आंसर। ये एक जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, तो ये 20 हो जाएगा। तो 2/12 इंटू 20, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 10 ज़ा 20, सो 1/12 इंटू 10, तो ये यहाँ पे बच जाता है। सो 12 इंटू 10 होता है 120। सो 120 ये हो गया डिग्री पर सेकंड। सो एंगुलर स्पीड मिल गया हमें डिग्री पर सेकंड। ये यहाँ पे लिखा है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन MHT-CET 2016 में पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिया है डिफरेंस बिटवीन एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। हमें निकालना क्या है? डिफरेंस किसमें? एंगुलर स्पीड वाला। कौन से दो हैंड दिए यहाँ पे? मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। तो यहाँ पे ओमेगा फॉर मिनट हैंड, आई राइट इट बाय ओमेगा एम, माइनस ओमेगा फॉर सेकंड हैंड। सो ओमेगा का फॉर्मूला आपको मालूम है 2 पाई/टी। टी फॉर मिनट हैंड, दोनों का एक ही यूनिट लेना पड़ेगा यहाँ पे। एंड आप देखेंगे तो ऑप्शन सारे सेकंड में, तो सेकंड वाला ही। मिनट हैंड जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो उसका पीरियड हो जाता है 60 मिनट, यानी सेकंड में हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकंड, माइनस 2 पाई/पीरियड ऑफ सेकंड हैंड। सेकंड हैंड जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो पीरियड उसका हो जाता है 60 सेकंड। 60 सेकंड यानी 1 मिनट, या यहाँ पे हमें सेकंड में लेना तो 60 सेकंड। तो ये सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे 2 पाई/60 कॉमन है, मैं बाहर ले रहा हूं, तो यहाँ पे 1/60 माइनस 1 यहाँ पे मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे 2 पाई/60, तो ये आ जाएगा। सो 1/60 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 - 60, यानी -59/60। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। जो एंगुलर स्पीड होता है, यहाँ पे देखिए सेकंड हैंड का एंगुलर स्पीड ज्यादा है, तो वो हमें पहले लेना चाहिए था। बट यहाँ पे हमें डिफरेंस डिफरेंस कभी भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है। डिफरेंस को कुछ साइन नहीं होता, डिफरेंस हमेशा लार्जर माइनस स्मॉलर, तो डिफरेंस पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, डिफरेंस कभी निगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पे 59/60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से यहाँ पे डिवाइड किया तो ये 30 आ जाएगा। पाई/30 मल्टीप्लाइड बाय, हम मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, 59/60। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 59 पाई डिवाइडेड बाय 60 इंटू 30। 6 3 ज़ा 18 होता है, और उसके ऊपर वो दो जीरोस। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस मिल गया 59 पाई/1800। यहाँ पे ये डिफरेंस मिल जाएगा रेडियन पर सेकंड में। एंड अगर ऑप्शंस देखेंगे आप, तो ये लिखा है यहाँ पे ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगुलर सेपरेशन बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ क्लॉक एट 12:20 PM। जब 12:20 PM होगा तो हमें
यहाँ पे देखो ये इसे हैंड्स की पोजीशन है, ये यहाँ पे मिनट हैंड की पोजीशन एंड ये आर हैंड की पोजीशन है। हमें यहाँ पे ये जो एंगल है कितना होगा ये निकालना है। अभी ऑब्वियसली अगर हम इलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो ये एंगल जो है ग्रेटर देन 90 आएगा, तो ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा। अब इस बाकी जो तीन बच जाते हैं वो ग्रेटर देन 90 है, तो हम देखते हैं कैसे निकालना है। आपको मालूम है ओमेगा होता है थीटा बाई टी या डी थीटा बाई डी टी, तो उससे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिखेंगे। ओमेगा हम लिखेंगे 2 पाई बाई टी इंटू टी। अभी एक काम करेंगे हम, 2 पाई एज इट इज, पीरियड में मिनट हैंड का पीरियड डाल देता हूं। कितना आ जाता है, मिनट हैंड जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो 60 मिनट हो जाता है। तो मिनट हैंड का पीरियड में मिनट में डाल रहा हूं 60 मिनट, मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल टी, टाइम इन मिनट। ठीक है, अभी 12 आवर तो है, बट मिनट हैंड जब ये यहाँ पे है तो कितने मिनट हो रहे हैं, 20 मिनट। सो टाइम इन मिनट में डाल रहा हूँ 20। तो ये सिंप्लीफाई करते हैं, 0 0 कट हो गया, ये 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, सो 2 पाई बाई 3 ये हमें मिल जाता है। अभी देखिए ऑप्शन में तो डिग्री में ऑप्शन है, तो हमें क्या करना है, पाई का वैल्यू डालना है डिग्री में। सो 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 180 डिवाइडेड बाई 3। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 6 18, ये 60, ये 0 एज इट इज ऊपर, तो 2 इंटू 60 आ जाता है 120 डिग्री। सो 120 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप देखेंगे तो 120 लिखा है इस ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, हमें हर एक क्वेश्चन कैलकुलेशन से ही सॉल्व करना है। अगर आप वॉच देखेंगे तो यहाँ पे अगर ये जब मिनट हैंड 5 पे रहेगा, उसके बाद 10 एंड 15 पे जब रहता है यहाँ पे, यानी 3 पे जब रहता है, 15 मिनट जब होते हैं, तो कितना एंगल हो जाता है, 90 डिग्री। 12 o'clock से हमने स्टार्ट किया तो ये 90 पे जब मींस 90 डिग्री एंगल हो जाता है यहाँ पे। तो ये दो जो यहाँ पे डिजिट्स है उनके बीच में 30 डिग्री एंगल है, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 20 मिनट यानी क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं 34 बेसिकली 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड यानी v, एंगुलर स्पीड उसे हम ओमेगा लिखेंगे यहाँ पे, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में इन तीनों का रिलेशन हमें निकालना है। हमें तो जो मालूम है पहले लिखते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमें मालूम है, एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा मालूम है। ठीक है, ये दो रिलेशन मालूम है। अगर ये दो रिलेशन हम यूज करेंगे तो आप ऑप्शन देखो, अभी हमें ऑप्शन देख के आंसर का पता लगाना है। सब जगह अल्फा इज इक्वल टू लिखा है, तो इस रिलेशन से हमें अल्फा का फॉर्मूला मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर। तो यहाँ पे ए बाय आर मिल गया। ठीक है, अगर सारे ऑप्शन देखेंगे तो सब जगह पे ए तो दिख रहा है, बट एक भी ऑप्शन में आर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है हमें आर को सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप ये जो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसका यूज करके आपको मिल जाएगा r इज इक्वल टू वी बाय ओमेगा, वो सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो a डिवाइडेड बाय v बाय ओमेगा, तो ये आ जाएगा a ओमेगा बाय v, तो ये हो गया अल्फा। अभी देखिए यहाँ पे a ओमेगा बाय v अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रेशियो ऑफ टेंजेंशियल टू रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियल एक्सेलरेशन। तो मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियल यहाँ पे लिख देता हूं। अभी दोनों के फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट कर देते, यहाँ पे कौन सा है, ये नॉन यूसीएम है ये। ठीक है, अभी देखिए अगर यूसीएम होता तो बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आर अल्फा आता है, तो ये आर इंटू अल्फा होता है 0 यूसीएम में, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 आता है। यूसीएम में सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होता है, बट अभी ये नॉन यूसीएम है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं लिखूंगा आर अल्फा डिवाइडेड बाय रेडियल एक्सेलरेशन हम लिखेंगे आर ओमेगा स्क्वायर।
यहाँ पे हम आर आर कैंसिल करेंगे तो हमें अल्फा बाय ओमेगा स्क्वायर मिल जाता है। अभी देखिए सारे ऑप्शन देखेंगे तो सब जगह हर एक ऑप्शन में लगभग अल्फा तो दिख रहा है, बट ओमेगा कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ओमेगा की जगह क्या दिख रहा है आपको? वी दिख रहा है, आर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आपको ये रिलेशन मालूम है तो ओमेगा आ जाता है v बाय आर। तो ये ओमेगा का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा अपॉन वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो अल्फा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियल एक्सेलरेशन। अभी ये ढूंढते ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं। अल्फा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। सो अगर ये ऑप्शन सारे केयरफुली देखेंगे तो ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं अल्फा आर स्क्वायर बाय वी स्क्वायर लिखा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल के बारे में कौन सा फॉल्स है ये ढूंढना है। इसका मतलब है चार में से तीन स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगे एंड एक कुछ तो गलत रहेगा, वो गलत वाला ढूंढना है। अभी देखिए पहला पहला ऑप्शन है सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये तो सही है, दोनों का फॉर्मूला देखेंगे आप तो सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, करेक्ट मींस ये ट्रू है। हमें फॉल्स वाला ढूंढना है। दूसरा है कंस्टिट्यूट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। अभी देखिए सेंट्रीपेटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर द सर्कुलर मोशन एंड जब सर्कुलर मोशन होती है तो उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल आ जाता है। तो यहाँ पे ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर नहीं है। दे हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड डायरेक्टेड अपोजिट टू ईच अदर बट दे आर नॉट अ कंस्टिट्यूट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो मुझे लगता है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बट आगे वाले भी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन में लिखा है एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी। बेसिकली दोनों फोर्स जो है एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। एक टुवर्ड द सेंटर होता है सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। एक्ट्स अलोंग द रेडियस, ये भी सही है, दोनों का डायरेक्शन अलोंग द रेडियस होता है, सेंट्रीपेटल टुवर्ड द सेंटर एंड सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर, बट दोनों अलोंग रेडियस है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे। A toy car is tied to the end of an unstretched string of length L. When revolved, the toy car moves in horizontal circle with radius 2L. So here they give one. So it moves with radius 2L. So it is tied with the string of length L. This you have to note down. And time period T. That time period is capital T. If it is speeded until it moves in horizontal circle of radius 3L. Now the radius is 3L. With period T1. The relation between T and T1 we have to write here. Hooke's law is obeyed. Now we have to use the concept related to the elasticity also. Here it is 3L that you remember. Here it is 2L. And the length is L. Now here we can do one thing here. So the period. So we have an idea about the period. Period T is equal to 2 pi r by v. This is the formula of period. But here the Hooke's law is obeyed. And this toy cart is moved in a horizontal circle. So it means that here centripetal force is required. And that centripetal force is provided by. So this force Kx gives us centripetal force. So we can write mv square by r is equal to centripetal force. Now in that, now here the radius is changed. So we can do one thing here. The period we can write in term of radius. So I can write this term v square is equal to kx divide into r divided by m. This is v square. So v is equal to under root kx r divided by m. So that I substitute here instead of v. So 2 pi r divided by this kx r by m. Now we can write here
everything in a square root. So in a square root, so 4 pi square r square m divided by k x r. So this is t. Now here we can cancel this r and 1 r from r square. So we get a formula of t under root 4 pi square r m divided by k x. So this is period. Now here period and radius relation we get. So here we get period proportional to under root radius as well as it proportional to x also. Now here the 4 pi is constant, 4 pi square constant, then mass of the toy cart is constant, k is the force constant for this string is a constant. Now we have to use this relation to obtain the formula. Now here, so we have to find out a relation for T1 everywhere in a option T1 they have to find out. T1 means second period. So I use T2 by T1 is equal to under root R2 by R1 into X1 by X2. Now the second period is they are called as T1. So this is T2 and this first period means T1. So first period they called it as a T. So T1 by T is equal to R2 by R1. Now you can see the radius, second radius is 3L. So 3L divided the first radius is 2L multiplied by X1. Now see here, so this X is for the extension. Now here the radius is 2L. The original length is L. So when it is revolved, we get a radius 2L. Means how much is the extension in the first case is 2L minus L is L. So divided by. In second case, the radius is 3L and the initial length is L. So 3L minus L is 2L. So 2L is the extension. This we have to cancel. This L get cancelled. This LL get cancelled again. Then this 3 by 2 multiplied by 1 by 2. So it is coming root 3 by 2. So 2 into 2, 4 and root 4 is 2. So root 3 by 2. So we get T1 by T is this. So T1 is root 3 by 2 into T. So this is the right answer for this question. And if you see all the option root 3 by 2 of T, it is written in the option D. So option D is the correct option for this question. I hope everyone understood this. Now we go for the next question. See the next question here. A next question is a coin is placed of a rotating turntable to rotate with angular speed. The coin just slip if it is placed at 4 centimeters from the center of the table. If angular velocity is double. Now here listen, whatever the omega I consider here, it is omega 1. So here omega 2 is twice of omega 1 they given. And we have to find out the distance at which coin start to slip. Now see here. So here we can use a relation. We know that V is equal to under root mu Rg. Now that V we can write in term of omega. V is R omega is equal to under root mu Rg. Then I can write a formula of, here we have to find out the distance. Basically distance means we have to find out R, because when we place a coin on a disc and disc start rotating, so the distance is like a radius. So that coin make a circle with that much radius. So this distance we have to find out means we have to find out here second radius. So here I can write this formula for this R2, or we can write it for omega first. Omega is equal to under root. So I can transfer this R to this side. So here mu Rg divided by this, I can shift it in a square root. So it is R square. So we get omega is equal to under root mu G by R. So here we get relation between omega and R. So here omega is inversely proportional to square root of R. We have to find out here R. So R2 we have to find out. So I can write omega 1 divided by omega 2 is equal to under root R2 by R1. So inverse relation. Now omega 2 is
twice of omega 1 is equal to now R2 and R1. So here the one distance they given 4 centimeter means R1 is 4 centimeter and R2 we have to find out. So squaring both side here, we get 1 by 4 is equal to R2 by 4. So by using that, we can find out R is equal to 4 by 4. So R is 1 and the unit for R1 is, so this is centimeter. So here 1 centimeter is the answer for this radius or the distance when the coin starts slipping. So here we can write it as the R2. So we get 1 centimeter and 1 centimeter is written in the option A. So option A is the correct option for this question. Now next question. For a particle moving in a vertical circle, the total energy at different position along the path. Listen here. So in vertical circular motion, total energy is always conserved. So here we can write the total energy at different position along the path is conserved. So you know the conservation of energy. We already proved the energy is conserved in vertical circular motion. Now next question. A mass attached to one end of a string crosses topmost point on vertical circle with the critical speed is centripetal acceleration when string become horizontal will be. Centripetal acceleration we have to find out when string is horizontal. Now see here, let I show you vertical circular motion. So these are the points, highest point, lowest point, and these are the horizontal point M and N. So we have to find out centripetal acceleration when it is at horizontal point, means at M or N. So both are the horizontal. Now velocity here or speed at point N is under root 3 rg and the centripetal acceleration is formula v square by r. So v square means under root 3 rg square, under root 3 rg square divided by r. So after squaring this and cancelling the common term, we get 3g as a centripetal acceleration or radial acceleration, and it is written in the option B. So option B is the correct option for this question. Next question. In vertical circular motion, so this word is extra here. The ratio of kinetic energy of particle at highest point to that of lowest points. Now here let me discuss again. So speed at highest point is under root rg and at lowest point is under root 5 rg. So we have to find out ratio of kinetic energy. So kinetic energy at highest divided by kinetic energy at lowest. So kinetic energy half mv square at highest point, it is under root rg square. So divided by at lowest point 1 by 2 m and speed is under root 5 rg square. So this 1 by 2 m, 1 by 2 m get cancelled. Under root rg square is rg, under root 5 rg square is 5 rg. So here rg get cancelled, we get 1 by 5 and 1 by 5 is 0.2. So here the ratio of kinetic energy is 0.2 and it is written in the option D. So option D is the correct answer for this question. Now next question. A disk of radius r. Now see here, a disk object they given, radius is r. Thickness they given r by 6. Moment of inertia is given I, about axis passing through center and perpendicular to plane. Disk is melted and recast into solid sphere. Now it is melted and recast into solid sphere. Then we have to write mi about its diameter. I think here the word is missing. Moment of inertia about its diameter we have to find out. Now see here. So what is common? So when disk is melted and they recast it into a solid sphere. So volume is constant. So volume of, I can write here
volume of disk is equal to volume of sphere. It's a solid sphere. So volume of sphere. Volume of disk, what is the formula? Area of the disk multiplied by its thickness. Area is what? Pi r square. So pi into radius they given capital R, r square, into thickness is r by 6. This is the volume. And volume of sphere is 4 by 3 pi. Now here radius, they are not mentioned. I use small r for the radius. 4 by 3 pi r cube. Because here disk and the solid sphere, both having a different radius. Because when we recast disk into the solid sphere, the radius are not remains the same. They are changing. So here now pi get cancel. Then here we get r cube by 6 is equal to 4 by 3 r cube. Now 3 2s are 6. So here r cube is, this 2 is shifted to this side. 4 into 2, 8 r cube. So this we get. So now what they given here? They given capital I is the moment of inertia of disk. Now disk having a moment of inertia about center, about a natural axis passing through center perpendicular to plane, mr square by 2. And this mr square by 2 we have to call as a I. And we have to find out mi of this solid sphere about diameter in term of this I. Now here for solid sphere, the moment of inertia is I is equal to 2 by 5 m into this small r square. I consider sphere having a radius small r. Now small r and capital R, we have to obtain the relation. Now see here. Now if we see this formula, we can write r is equal to, taking cube root of both sides of this, r is equal to, we get 2 into small r. So this is very important relation. So small r, instead of small r, I can write r by 2. So here we get m. Small r is capital R by 2 bracket square. Now after simplifying this, we get 2 by 5 multiplied by 1 by 4 mr square. So here we get 2 by 5 4 the 20 mr square. So we get this moment of inertia. But by this relation, we can write mr square is 2i. So I can substitute 2i instead of that. So we get 2 by 20 into 2i. So 4 by 20 into I. So I will write it here with a different pen. Now here I is equal to, so 4 by 20 into I. 4 by 20 is coming 1 by 5 into I. So 1 by 5 into I means I upon 5 basically. It is written in the option A. So option A is the correct option for this one. Listen, we find out the common volume here. And by that we obtain the radius capital R. And then we obtain the answer here. Now we go for the next question. The next question is, the moment of inertia of thin uniform rod rotating about the perpendicular axis passing through one end is I. So it's a rod. And if we consider the rod, the moment of inertia they given about an axis passing through one end. So this is the one end. And that moment of inertia they called as the I. So you know that I is m, L, length is, okay, L I consider ml square by 3. So this is the moment of inertia about one end if the rod rotate about this. Now they given the same rod is bent into a ring. Its moment of inertia about diameter is. Now I consider the same rod is bent into the ring and moment of inertia about diameter we have to find out. This is a diameter. So about diameter, the moment of inertia is mr square by 2. Okay, I write it as a I dash. Then we have, I called it as a I1, sorry, I1. Then we have to write ratio of I upon I1. So see here, I upon I1 is
m L square by 3 divided by m r square by 2. We can cancel m. So we get L square by 3 multiplied by 2 upon r square. So we get 2L square divided by 3R square. So this is the ratio. But in an option, you can see somewhere written pi. Now we have to find out here. And you can see here, I1 by I1 we have to find out. So we can do one thing. We can find out the common relationship between L and R. Now here the length is L and here radius is R. Now the same rod is bent into the ring. So we can write this length is equal to circumference of this ring. So I can write length as a circumference. So 2 into L square. So L is 2 pi r. 2 pi r square is 4 pi square r square divided by 3r square. We can cancel the common term and then we get the final answer. Here common is r square. So we get 8 pi square by 3. It is I upon I1. And if you see all the options, 8 pi square by 3 is the option B. So option B is the correct answer for this question. Now next question is, a square frame ABCD is formed by 4 identical rods, each of mass m, length L. This frame is in XY plane, such that side AB coincide with x-axis. So let I draw here both the axes. So this is the x-axis, this is the y-axis. I consider this is a side, this is a rod whose side is AB. It coincides with x-axis. And AD along y-axis. I draw here AD. It is along y-axis. The moment of inertia of the frame about x-axis. So these are the 4 rods. And we have to find out the moment of inertia. So here, every side having a length L. Now here, we can find out the moment of inertia by considering one by one rod. So if I consider this is the rod number 1, rod number 2, and rod number 3. So this rod is along this axis, so we are not considering that moment of inertia. So the total moment of inertia is I1 plus I2 plus I3. Now here, if we consider the first rod, so this axis is along x-axis and this axis is passing through the one end of this rod number 1. So about one end, the moment of inertia is ml square by 3. Plus, if I consider the second rod, again about one end, so ml square by 3. Plus, when we consider this rod is at a distance L from this axis and the mass is m. So m L square, mass into distance square. So after solving this, we get 3, 4, 5 ml square by 3. So this is the moment of inertia of this system and it is written in the option A. So option A is the correct answer for this question. Now next. A uniform cylinder has length L. So here the given cylinder, length L, radius R. The moment of inertia of cylinder about an axis passing through center. See here, moment of inertia about an axis passing through center and perpendicular to length. Equal to, means I consider that moment of inertia. If this is cylinder and this is the moment of inertia. How much is the moment of inertia of cylinder about axis passing through center and perpendicular to the length? It is ml square by 12 plus mr square by 4. This is the moment of inertia. And this moment of inertia equal to the given moment of inertia of the same cylinder about an axis passing through its center and perpendicular to its circular face. Means this axis passing through center and perpendicular to the face. Both the moment of inertia are same. If this rod cylinder rotate about this axis, this is the moment of inertia. About this axis, this is the moment of inertia, mr square by 2. And both the moment of inertias are equal, they give, and you have to obtain relation between L and R. So they are equal, so we can equate.
So ml square by 12 plus mr square by 4 is equal to mr square by 2. Now we cancel the common term. The common is mass in everywhere. We have to cancel it. So we get L square by 12 plus R square by 4. So is equal to R square by 2. So this R square by 4 we can shift to that side. So we get L square by 12 is equal to R square by 2 minus R square by 4. So it is coming R square by 4. So 2 minus 1 R square by 4. So here L square is equal to, we get R square by 4 into 12. So we get 4 3s are 12, 3R square we get. So we get L is equal to, I can use capital L, small l, it's okay. So root 3 under root R square is root 3R. So here root 3 into R, you can see here R root 3. So option D is the correct answer for this question. So you have to identify the condition given in the question. Now next question is, let M be the mass, L be the length of thin uniform rod. In first case, now maybe two cases they given, axis of rotation passing through center and perpendicular to length. So rod and axis is passing through center and perpendicular to length of the rod. This is the axis. In second case, axis of rotation passing through one end and perpendicular to the length of the rod. And this is second case. This is the first case and this is second case. The ratio of radius of gyration in first case to the second case. So here the moment of inertia is ml square by 12. So here it is ml square by 3. So radius of gyration in this first case is, you have to skip m and you have to take the root. So L by root 12 is the first case. So second case moment of inertia is L by root 3. So this is second moment of radius of gyration, and we have to take their ratio, first case to second case. So K1 by K2 is equal to, so L by root 12 multiplied, I write, so root 3 by L. So L get cancelled. So here it is 12. So here we can write 3 by 12 in a root. So 3 4s are 12. So 1 by 4 in a root means it is 1 by 2. So K1 by K2 is 1 by 2. And you can see here 1 by 2 is written in the option B. So option B is the correct option here. A solid cylinder has a mass m and radius r and length L. Its moment of inertia about an axis passing through its center and perpendicular to its own axis. I mean, this is a cylinder. And this is the axis passing through center and perpendicular to length. So listen, when this is the axis, you remember here. So when we see from the front side, this is like a rod. And axis is passing through center of the rod. So it is ml square by 12. So you know that mi of rod about an axis passing through center is ml square by 12. But if you see from this side, so you can see here it is a disc whose thickness is larger. And this axis is along the diameter of the disc. So along the diameter of the disc, the moment of inertia is mr square by 4. So this is the moment of inertia of this cylinder. And it is written in the option D. So only the thing is mr square by 4 is written first and ml square by 12 is after. So this answer is option D. Now after that, next one is moment of inertia of uniform thin rod of length L, mass m, about an axis passing through a point at a distance L by 3 from one end and perpendicular to the rod. So it is a rod. So here, let's see here. So this is a rod. So we know about this axis. It is ml square by 12. And we have to find out about an axis which is passing through this point, which is L by 3 from one end. So this is L by 3.
So here, so this, if this distance is L by 3, we have to find out this H. How much is H? Now see here. So this distance H we can write H is equal to. So this total distance is here. It is L by 2. And if we subtract L by 2 minus L by, means subtract L by 3 from that L by 2, we get the H. L by 2 minus L by 3. So it is coming 3 minus 2, L by 6. So here it is L by 6. So we can use now parallel axis theorem. By parallel axis theorem, what we write? IO is equal to IC plus MH square. IC is ML square by 12 plus M. H is now L by 6. So L square by 6. Now here, we can solve this one. ML square by 12 plus ML square by 6. I can multiply the numerator and denominator by 2. So here 2 plus 3, 3 ml square by, it is 12. So 6 2s are 12. So 3 4s are, it is coming. So ml square by 4, but ml square by 4 is not in the option. Let me check it again. So here it is ml square by 12 we are written. So here it is ml square by 6 square is 36. Sorry. So here it is 36. I made a mistake here while doing the calculation. So it is 36. Here it is 36. 6 square is 36. So here I can multiply it here by 3 and here also 3. 12 3s are 36. So 3 plus 1. So we get 4 ml square by 36. So here I can write ml square by 9. So this is the moment of inertia. So ml square by 9 is written in the option B. So option B right option है. छोटी सी गलती हो गई थी यहाँ पे. लिसन, यहाँ पे ऐसी गलती अलाउड नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The moment of inertia of a uniform disk about diameter is I. Its moment of inertia about an axis perpendicular to its plane and passing through a point on its rim is. Now see here. So this is a disk and about diameter, the moment of inertia is m r square by 4. For same disk, they ask moment of inertia about an axis perpendicular to its plane and passing through a point on rim. Now let I show you in diagram here. This is a diagram. This is the disk and this is the axis which is passing through point on the rim. About this axis we have to find out in term of this I. Now about this central axis passing through center and perpendicular to the plane, it is mr square by 2. So here it is mr square by 2. So here distance between these two axes is r. So we can use parallel axis theorem. So I0 is equal to IC means mr square by 2 plus m into distance square. So here we get 3 by 2 mr square. This is the moment of inertia. But in option they given the option in term of I. So this mr square by 4 I can write by using this formula. I can write mr square is 4 into I. So I can substitute 4 into I instead of mr square. So here 3 into 4 divided by 2. It is coming 6I. And this is the moment of inertia here. And it is written in the option C. So option C is the correct option.
Now next question. It is a theoretical one. Which of the following is not correct? See here, not correct. It means that three options are correct. So let's see, torque is equal to moment of inertia into angular acceleration. We already learned torque is equal to I alpha. So this is a correct equation. Angular momentum is equal to moment of inertia into angular velocity. So L is equal to I omega. This also we already learned. So this is also correct. Force is equal to mass into acceleration. F is equal to ma by Newton's second law. We already learned. So this is also correct equation. If three are correct, means the fourth one is incorrect, and we have to identify the incorrect, means the not correct option. So this is the right answer. So moment of inertia is torque divide moment of inertia. By using this we can write torque divided by angular acceleration, not torque multiplied by. So this is the not correct option. So option D is the right answer for this one.